thing that belongs to somebody legally, you will call it as property. It could be car as it there on the slide. It could be a pencil book. It could be as cheap or as expensive as it could be. Okay. It doesn't matter what is its price, but at a time you have ownership on it, it is considered as intellectual property. Now, so property, how could you classify the properties? Commerce student, any commerce students, how could you classify the property? Raise your hand and write in the chat box. How would you classify properties? So basically, please be attentive and answer. There is, I think, one class for you regarding, okay, tangible and intangible assets. So could you differentiate between tangible and intangible properties? Basically, when we talk about tangible properties, so as Hitachi has said, that properties are of two types. One is tangible and another is intangible. Okay, so with respect to tangible property, we could say that we could touch the properties or we could measure them. Like just now we have discussed the example of mobile phones. Okay, pen, book, pencils, jewelries, your farmhouses, your lands, buildings, cars. Okay, tangible property is further divided into two properties, which is the movable property and the immovable property. Okay, now could you give me the example of movable and immovable property? Movable properties are those which can be moved from one place to another place, like car, vehicles, buildings. Okay, and immovable properties are which can't be moved. Sorry, building is immovable property. Okay, land, buildings, farmhouses, these all are immovable property. Now, this is all about tangible property. Then there is another part of property which is intangible property. So, what could you say that these are intangible properties? What could you say about them? You can't touch them or you can't see them. So, how could you classify them then? Suppose I am booking an Ola. Now I have to come to office exactly at 10 a.m. So I booked the Ola. Okay. Is Ola driver earning? Is it a property? Or can I see what kind of property is it? Uh, Similarly, a teacher teaches you, or a doctor treats you whenever you are not healthy or whenever you are feeling weak. So these are some kind of hidden properties. Okay, and hidden properties are considered as intangible properties. All kind of services are included in intangible properties. Now, your intellectual property is also your intangible property. Why? I have some thought in my mind. Could you see it? No, you couldn't see it. So any kind of idea, you can't see it. Or any kind of service, you can't see it. That is called as your intellectual property. Okay, and your intangible properties. Now, next concept is intellectual. So properties is now clear to you. Now moving on to the another term which is intellectual. How could you define intellectual? What is the meaning of intellectual? You, if you are have the habit of reading newspaper or listening to some sort of debates or speeches, you would definitely you would have come across this term intellectual. Yes, Hitashi.
What is the meaning of intellectual? Another students are also logical thinking. Okay. Anyone else? You could, all students, you should participate in the interactive session. You should also answer the questions. Hitashi said that intellectual means logical thinking. Or any answer? Anybody? Okay. So we could say that any intellectual means mind. Any idea or anything that is coming from a human mind, it is called as intellectual. Okay. So now when intellectual is combined with the term property, it is as a whole, it is considered as intellectual property. How? You have an idea, you have a thought, and you are converting your ideas into a property. How could you convert it? Suppose I am facing some kind of issue, some kind of problem, like regarding tying up or managing my stationaries, okay, on my office chair or on my office bench. So I am in the thought process that how could I solve this problem. So I make some kind of organizer which is completely new. Okay, that idea is there inside my mind. So now it is intangible and it is not a property until or unless it is, till now it is an idea. So I am going to work on that idea. Okay, I will make the organizer. Now this organizer is completely new and not there anywhere else known to the public. So I go and invent that organizer that will organize my all my stationaries and all my office stuff. Okay, so I will give the basic infrastructure of the ideas to the manufacturing industry, and it will manufacture that organizer. So I have the organizer, and that organizer, how it comes into the existence from my thought process, from my ideas. The organizer is into the existence. So what I have done in this process, I have the idea, I have converted it to a property. So isn't it the intellectual property? Okay. Now we could say that intellectual property is a product of your mind. So that organizer is the product of my mind. And, and it belongs to you just like your car and house. So that organizer, it belongs to me just like my car and houses. Okay. Now, everybody, please have a look on the slide and identify this thing. What you could see on the slide. And just tell me, everyone, now I need answer from everyone. What is the difference between these three images? What is the first thing that comes to your mind when you look at it? Everyone. Any other apart from Hitachi? हिताशी के अलावा सबको, किसी को पता नहीं है क्या ये क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? इसका इस्तेमाल कोई नहीं करता. These are the bikes of different type. Okay, these are the bikes. So what is the difference that you could just see? Don't They go. have different designs. What is the difference you are? They have different designs and shapes. They have different shapes. Any other answer? Any other? One is scooty, brands, okay. Bikes, okay. These are bikes. So what difference could you interpret by looking at the images? They have different brand, one answer. So just now one answer was that they have different designs.
couldn't you identify that all are having, all are doing the same thing? Okay, all are used for the same purpose, but what is the main difference? You have different looks. Even if you look at the two bike, one is the sports bike and one is the normal bike, they both have different models. Okay, their looks are different. So could you say that this is the intellectual property, the looks? Yes. Yes. How could you say that? With reason, could you explain? Just now we have gone through the very simplified form of intellectual property, how your idea is converted into a product or into a property. So could you explain how this design is considered as the intellectual property? You could write on the chat box. Okay. Yes, because their build property is different. Patented design and logo, that is different thing. Just now, don't go into the details. Explain me why I have picked up one point that they have different designs. You have to explain why these designs are the intellectual properties. Anyone? हम इन डिजाइन्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्यों कहेंगे? अभी अभी हमने ये डिस्कस किया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जब आइडियाज को हम प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करते हैं तो उनको बोलते हैं। अभी आप मुझे बताइए कि ये जो इनके डिजाइन्स हैं कि किस तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाएंगे? Anyone, Hitachi? Okay, now I am explaining. Suppose you are going to a jewelry shop. Which jewelry do you select the first? The jewelry must be having different design. Okay, and whenever you ask the jeweler to make a particular design, he tell you that, ma'am, there are extra charges for this particular design. It means design is adding too much importance to the jewelry, to the price of jewelry. Now, in this case, you could see that and you could practically experience that the sports bike has higher price than the normal bike. Why? Because the shape, the model is someone coming from the model, the design is the product of human mind. Okay, some mind has this idea that I will give this color, this shape, this type of 3D patterns to that sports bike, and when he put this shape or these colors or these lines or these models onto the bike, he is actually making into a property, because this particular design is expensive because of its looks. It means he had converted his design into a, his idea into a design property. Okay, so you could say that design is also an intellectual property. Why? Because the shape or the patterns is coming from human mind, and now this pattern has some price value. You have commercialized it by putting it onto a machine. Okay, so you could say that it is a intellectual property. Is it clear now to everyone? Now moving on to the next slide. Can you identify? Just write in the chat box. Can you identify these items? Everybody now. These are very simple. Answer. What are these? First image. Is it? What is it?
The last one, this one, what is this? Logo. It is in logo symbol. Okay. This one is mobile phone with apps. This is a wallet. This is a packet. Everybody, are you able to recognize them? Okay. So you are saying the last one that it is Toyota. How could is I can't see any word like Toyota written over here. How could you say that it is Toyota? Why are you saying that it is Toyota? The answer is by logo. Okay. So by through logo you could recognize a particular item. Okay. Now we will learn about, we will in our later slides, we will get to know what is the importance of this particular image. You will recall it after some slides. Okay. Now, what is the need for innovation? Why do you innovate? I have a very simple question for you. Suppose you are playing a game. There are many online games that are available on the mobile phones. Now you are playing a game and every time you wait for the upgrade or new feature into it. Why do you want that feature? Why do you want the upgradation of your mobile phone? The same is the reason that why do we need innovation? Anyone please answer it. Or you always try to, if you want to buy a mobile phone, you want to buy that one which has some added up qualities, like with regard to the previous one, because we go by using the same thing. Okay, one thing you need, it means you need something new. That is the main, that is the core of your intellectual property. You know, that is why you innovate, because you need something new. And why do you need something new? Why do you need something new? To do work easy. Okay, to easy. Any other answer? Suppose if our app got upgraded, if our online gaming app it got upgraded, and now the feature that we want is not included in it, do you still play with that particular game? No. So basically, we innovate so that we could find a solution for a particular problem. Okay, that will in turn solve our purpose or make our work simple. That is the reason you always get your apps upgraded. Why? Because on upgradation, you will have some new features into it which will make your job easy or which will solve a pertaining problem. The same is the reason why do we innovate. Okay, if there is a problem, we need to find a solution, and that solution you can have multiple solutions to that problem, and the one which is the best one, you will adapt that particular solution. So now there are four particular reasons for the need of innovation, and these reasons are technological advancement. The first one is technological advancement. Okay, we need to upgrade because we, and that leads to technology advancement. Second thing is changing the customer's needs. Okay, you one game is launched, and now with the time you get to know the problems with that particular game. So, and your needs get on changing. So every time through permutations and combinations, through experiments only you get to know, okay, I have problem with that particular feature of it.
Second thing is there is intense competition in the market. Okay, and last is changing business environment. So these all are the reasons that leads to innovation. Okay. Now, if suppose the one game is very popular and another gaming app is still competing with it, now both are competitive. Both thinks that I have to add some feature which is better than the other one. So that is also the reason for innovation, because they have to set up their market. They have to have monopoly in the market. Like the iPhone, why is it so expensive? Why it is so famous? Just because of the features that is there in it. Just because of technologies, it has the most innovative features, most upgraded one. Okay, so now the brief definition of intellectual property. What is intellectual property? It refers to the creation of the mind, such as inventions, literary and artistic works, designs and symbols, names and images used in commerce. So, is the definition okay to you now? Everybody, could you able to understand the definition of intellectual properties? क्या हम किसको बोलेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? जो ह्यूमन इंटेलेक्ट से निकली हुई हो, ये कोई इन्वेंशन भी हो सकती है, ये कोई लिटरेरी वर्क भी हो सकता है, ये डिजाइन्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं और इमेजेस भी हो सकते हैं. जैसे अभी भी हमने डिजाइन्स देखा, बाइक के हमने एग्जांपल्स देखे, फिर आपने टोयोटा बोला, तो ये कोई सिंबल्स भी हो सकते हैं. फिर अभी मैंने आईफोन की बात की, तो वो क्या थी? वो इन्वेंशंस थी. ठीक है, तो इन सभी को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं. नाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रिजल्ट कैसे हुआ? मतलब हाउ यू कुड हैव come into the concept of intellectual property. There are multiple things involved in it. Now, first thing is, if you have like some idea, what could you do? As an individual, I have some idea, but I don't have resources. The idea is major. Just now, I have discussed about the creation of an organizer, any kind of cloth organizer, maybe shoe organizer or cosmetic organizer. I have the idea. Okay. Now, cosmetic organizers, but I don't have resources. I'm not rich. I don't have the money to implement on that idea. Okay. So, what could I do? I could go to a small industry. I could go to a स्मॉल इंडस्ट्री. मैं क्या कर सकती हूँ? एक छोटी सी इंडस्ट्री में जा सकती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आई हैव आइडिया, आई नीड योर हेल्प, काइंडली हेल्प मी फाइनेंशियली, आई वांट टू वर्क विद यू, आई विल गिव सम क्रेडिट्स टू यू. ओके. या फिर मैं कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर सकती हूँ विद सम, अपने जो दोस्त हैं उनसे थोड़े थोड़े मनी कलेक्ट करके आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट आइडिया. ओके. नाउ लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकती हूँ मैं. ठीक है. इस तरीके से मैं उस आइडिया पे वर्क करना स्टार्ट करूंगी. अब क्या होगा? सपोज मैंने अपना प्रोडक्ट निकाल दिया, फिर मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगी उसकी. मेरा प्रोडक्ट बना, कैसे न कैसे मैंने उसकी एडवर्टाइजमेंट की. एडवर्टाइजमेंट आप कैसे कैसे कर सकते हैं? हाउ डू यू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट? टेल मी, व्हाट आर द methodologies that you could adopt for advertisement of your invention? Social media, okay. TV, radio, then you could have pamphlets, you could have posters, you could, yes, newspapers. But now my question is, could you directly post your product on these social media site or these advertisement platforms? No, you could not. Because
if you directly post that your invention or your creativity, then there are many chances that somebody just picked up your idea and go to another industry, or if he is more smarter than you, if he has more knowledge about the intellectual properties and rights, he will just go and copy your ideas and then he will commercialize it by himself. Okay, there are chances of the idea being get stolen. So the first thing that you should do is, before approaching any advertisement or before going for any advertisement, the first thing you should do is you should protect. Only then you should commercialize it. It will stop others from making bad use of your ideas or from getting monetary benefits through your ideas. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आइडियाज को सबसे पहले आपको, अगर आपका लोगो हुआ, चाहे तो आपका डिजाइन हुआ, अभी मैं सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की बात कर रही हूँ, कहीं भी एडवर्टाइजमेंट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. नाउ यू आर गोइंग थ्रू अ लीगल प्रोसेस. अभी आप क्या कर रहे हो, लीगल प्रोसेस से जा रहे हो, तो आपको कोई भी खतरा नहीं रहेगा उस प्रॉपर्टी के नुकसान होने का. ठीक है, अभी आपने क्या किया, उसको प्रोटेक्ट करा दिया है. You have protected it. So second thing you should do is, now you are advertisement. First you have protected it and now you are advertising it. अगर वो मार्केट में चली वो चीज, अब क्या आएंगी, आपको खुद से कंपनीज अप्रोच करेंगी, खुद से आपको कंपनीज कुछ शेयर्स देंगी, उसमें अपने आपको बोलेंगे कि आप हमारी कंपनी में इतने शेयर्स ले लिए, बहुत आइडिया वर्क करने वाला है. जैसे आपने शार्क टैंक देखा होगा, उसमें जो जो उनको आइडियाज पसंद आते थे वो तुरंत उसके लिए ऑफर डील्स रख देते थे. ओके, देन यू कुड गो फॉर इंडस्ट्री एंड थ्रू इंडस्ट्रीज आपका पर्पस सॉल्व हो गया, आपके आइडिया ने वर्क किया. इनफैक्ट अगर आप गूगल का एग्जांपल लीजिए, तो अभी गूगल कितनी बड़ी कंपनी बनी हुई है, बट आपको पता है उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, एक एल्गोरिथम से. So algorithm is what? An algorithm is human idea. That's it. That is the core of the whole industry. ठीक है, लेकिन जो जैसे iPhones हैं, why they are expensive? Because they know how to deal with the intellectual property rights. आपको पता है उनके यूनिक फीचर्स क्यों होते हैं? जहां जहां उनको दिखता है कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, वो वहां से क्या कर लेते हैं, वो पर्टिकुलर फीचर उठाते हैं और उनसे राइट्स ले लेते हैं उसी फीचर का. अब क्या होगा, जब राइट्स ले लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जिनसे उन्होंने राइट्स लिए हैं वो कंपनीज उस फीचर का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगी, वो सिर्फ उन्हीं के पास रहेगा. इसीलिए आप देखते हैं कि इनके फीचर्स भी यूनिक होते हैं और ये एक्सपेंसिव भी होते हैं. ओके, सो टुडे आई थिंक वी विल गेट टू नो अबाउट पेटेंट्स, डिजाइंस, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एंड जीआई. सो आपको भी डिजाइन का और ट्रेडमार्क्स का थोड़ा थोड़ा पता चल गया होगा, है ना. डिजाइन जैसे हमने बाइक का एग्जांपल लिया था, और ट्रेडमार्क्स का जो हमने लोगो का लिया था. अभी हम पेटेंट्स की बात करते हैं. ठीक है, तो अभी मैं आपको 3 इमेजेस दिखाऊंगी इसमें, और उसके बाद में आपको 2 इमेजेस दिखाऊंगी. आप इन इमेजेस को ध्यान से देखिएगा और फिर मुझे डिफरेंस बताइएगा कि इन 3 में और उन बाकी की 2 में क्या डिफरेंस है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इमेज. Now I will tell you the introduction about this image. Basically, जब कोविड की प्रॉब्लम थी, when there was COVID issue, so teachers have to upload the videos. लेकिन एकदम से अब किसी की वीडियो, उस टाइम पे आदत नहीं थी वीडियोस बनाने की, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अरेंजमेंट किया है इस तरीके से कि ये जो मोबाइल है उस पर्टिकुलर एंगल पे शिफ्ट हो जाए, ताकि बोर्ड पे जो भी वो लिख रही है वो क्लियर आ जाए. ओके, दिस इज द सेकेंड इमेज. यहाँ पे क्या है, बहुत गर्मी की वजह से इन्होंने क्या किया है, गर्मी से बचने के लिए इन्होंने सोलर पैनल को और फैन को कंबाइन कर दिया. अभी क्या होगा, धूप में ये खड़े रहेंगे तो जितनी धूप मिलेगी सोलर एनर्जी बनती रहेगी, और यहाँ पे इनको ये फैन चलेगा और इनको गर्मी नहीं लगेगी. ये सेकंड है. और ये थर्ड है कि स्पेशली जैसे के हॉस्टल्स में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम रहती है, और वो प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी लाइट चली जाती है, उनके पास गैस नहीं होता, स्टोव नहीं होता, तो उन्होंने उधर जुगाड़ किया हुआ है. इनको भूख लगी थी, इन्होंने मैगी बनाया, कुछ भी बनाया, तो इन्होंने कैंडल्स की हेल्प से वो कुकिंग की है.
अभी ये तीनों फिगर्स आई थिंक यू आर familiar with these. Okay, now coming to these two. यहाँ पे गुरसिमरन सिंह नाम से ये बच्चा है, इसने क्या इन्वेंशन किया है, क्या किया है इन्होंने जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, क्या वो मोबाइल पे पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते वो, ठीक है। तो इन्होंने इस तरीके का एक डिवाइस बनाया है ताकि वो जस्ट स्क्रीन पे देखें और वो पढ़ पाए कि स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। अदरवाइज तो वो सिर्फ केवल क्या लिख सकते हैं, क्या यूज करते हैं, वो सिर्फ ब्रेल लिपि से पढ़ पाते हैं, बट ब्रेल लिपि तो स्क्रीन पे नहीं है ना। तो इधर क्या किया इन्होंने, एक डिवाइस बनाया है जो कि इस विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की मदद करे ताकि वो जो स्क्रीन पे लिखा है उसको क्लियरली पढ़ पाए। एंड हियर इन दिस इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक हार्ट अटैक डिटेक्ट करने की चिप बनाई है, ठीक है। अ स्किन पैच दैट डिटेक्ट अ साइलेंट हार्ट अटैक 6 hours before it happens would revolutionize the healthcare. Okay, so just tell me कि इन दोनों में और इन तीनों में क्या डिफरेंस आपको दिखा, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। एंड दीज टू, आप सबको समझ आ गया है पांचों जो फिगर्स हैं उनके बारे में? यस हितैषी, हिताक्षी, हाँ जी। तो अभी आपको जो भी आपके माइंड में आया कि ये डिफरेंस है इन तीनों में और इन दोनों फिगर्स में, आप प्लीज यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखिए। Hitakshi said that the last two are created on the specific problem, but these two are also solving, these three are also solving some problems. यहाँ पे इनको एडजस्टमेंट में दिक्कत हो रही तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई में फ्री में, मतलब विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी, ये सोलर पैनल की मदद से अपना समर की हीट वेव से बच रहे हैं। यहाँ भी इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, गैस नहीं थी तो इन्होंने विदाउट गैस अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। एनी अदर आंसर? दक्षा पटेल, क्या प्रॉब्लम आपको लग रही है, क्या डिफरेंस है तीनों फिगर्स में और उन दोनों में? ओके, नो आंसर। आई विल गिव यू अ हिंट, ठीक है। वहां से लास्ट टू आर लीगली क्रिएटेड। ओके, योर आंसर इज लास्ट टू। अच्छा, एक और मैं हिंट देती हूँ, यहाँ पे जो भी इसमें कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं मोबाइल को वो सपोर्ट करने के, क्या वो सारे कंपोनेंट्स पहले से नोन है? क्या ये जो मोबाइल है ये पहले से जाना हुआ है? क्या ये जो इन्होंने सेट का या जो भी इन्होंने यूज किया है पहले से सभी को मार्केट में मिला? क्या ये जो इन्होंने यूज किया है ये मार्केट में नहीं है? ऐसे इसमें देखिए और इसमें देखिए और फिर इन दोनों फिगर्स में देखिए। Now, any answer? C. पहले तीन फिगर्स में जो भी चीजें इस्तेमाल की गई थी
उसमें एक भी ऐसी चीज नहीं है जो मिलके कोई नई चीज बने, ठीक है। ये सारी चीजें वेल नोन है कि कोई भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, फैन नोन है, सोलर पैनल नोन है, एनीबडी कुड डू द अरेंजमेंट ऑन ग्रिड अरेंजमेंट, ठीक है। ये सब नोन है, कोई भी अपना इनको मिला के एक चीज बना सकता है। ये सारी चीजें जो है वेल नोन है, इसमें भी सब वेल नोन है, इसमें नया क्या हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको कुछ वेल नोन दिख रहा है, ऐसा कोई डिवाइस था ही नहीं पहले। इसका मतलब है कि इस बच्चे ने इसमें कुछ ना कुछ ऐसी फंक्शनिंग या एल्गोरिदम्स यूज किए हैं जिसकी हेल्प से ये रीड कर पा रहा है। तो यहाँ पे एज अ होल इसको एक सिंगल इन्वेंशन माना जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये चिप है जो इन्होंने बनाई है, ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है। ये दो तीन चीजों का पार्ट मिला के जो वेल नोन है उससे क्रिएट नहीं की गई। इनफैक्ट ये पूरा एक नया करते हैं। तो हम इन्वेंशंस कोई भी प्रोडक्ट या प्रोसेस को बोलते हैं जो कि या तो नया हो, ठीक है, या फिर उसमें कुछ ना कुछ एडवांसमेंट हुई हो। अभी जो हमने फर्स्ट 3 फिगर्स देखी थी उसमें कोई एडवांसमेंट ही नहीं थी, वो नया भी नहीं था, वो सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 और मल्टीपल थिंग्स था, 2 और 3 थिंग्स, ठीक है। तो उनको हम इन्वेंशंस नहीं कहते हैं। और जब भी आप राइट्स की बात करते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, तो आप हमेशा उन चीजों पे राइट्स ले सकते हैं जो कि नई हो, जो कि इन्वेंटिव हो, आपको मार्केट में वो कहीं नहीं दिखी होनी चाहिए, आपका आइडिया बिल्कुल नया होना चाहिए, ठीक है। तभी आप उनको प्रोटेक्ट करा सकते हो लीगली, ओके। तो पेटेंट्स सबसे पहले एक टर्म आती है। पेटेंट्स हम किसको बोलते हैं? पेटेंट्स हम या तो प्रोडक्ट्स को देते हैं या फिर प्रोसेसेस को देते हैं, ठीक है। बेसिकली हम इन्वेंशंस को पेटेंट्स देते हैं जो कि प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं और प्रोसेसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये लीगल राइट्स होते हैं जो कि आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फॉर 20 years। आई थिंक पेटेंट आपको क्लियर हुआ होगा, वो 5 जो हमने इमेजेस अभी भी देखे हैं। तो अभी एक एग्जांपल हम छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट और प्रोसेस क्या हो सकता है? अभी आपने शार्क टैंक देखा होगा, तो वहां पे आपने क्या देखा था? कोई फूड बनाने की रेसिपी लेके आए थे, कुछ लोग अपना आइसक्रीम बनाने की रेसिपी लेके आए थे, कुछ हेयर ऑयल बनाने का प्रोसेस लेके आए थे। तो आप इन्हीं सभी चीजों को पेटेंट करा सकते हैं ठीक है। ऐसे जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे कि 1890 में ये जो बल्ब है इसको पेटेंट ग्रांट हुआ था, ठीक है। वाई? क्योंकि उस टाइम पे कोई ऐसा डिवाइस था ही नहीं जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया को लाइटन कर सके। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वहां पे रोशनी कर सके। तो उस टाइम पे थॉमस एडिसन ने बल्ब की इन्वेंशन की ना। अभी मैं अगर बल्ब इन्वेंट करती हूँ सेम, अभी मैं एक बल्ब मैन्युफैक्चर कर देती हूँ, तो क्या ये पेटेंट का सब्जेक्ट मैटर होगा? क्या आप इसको कहोगे कि इसको पेटेंट मिल सकता है? हिताक्षी इज सेइंग नो। व्हाई? क्योंकि अभी हम हमारे पास इससे भी एडवांस सोर्सेज आ गए हैं। जैसे पहले हम यूजुअली जब छोटे हुआ करते थे तो हम नॉर्मल टीवी यूज करते थे, फिर एलईडी टीवी आ गए, अभी क्यूएलईडी आ रहे हैं, ओएलईडी आ रहे हैं, ठीक है, और वो भी फर्दर रिजोल्यूशन में आ रहे हैं। तो आपको अगर पेटेंट मिलेगा तो ओएलईडी से भी बेटर जो भी आएगा टीवी उसके लिए मिल सकता है, आपको पुराने टीवी के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी आपको पेटेंट नहीं मिल सकता। तो कंडीशंस क्या क्या देखी हैं अभी अभी हमने पिछली स्लाइड्स में? हम किस नतीजे पे आए हैं कि हम पेटेंट्स केवल उन चीजों को या उन प्रोडक्ट को और प्रोसेस को दे सकते हैं जो कि जिनमें कुछ ना कुछ नया फीचर हो, ठीक है। या फिर नया फीचर ना भी हो लेकिन कुछ पुरानी टेक्नोलॉजी में उनमें इम्प्रूवमेंट हो। जैसे मैंने अभी टीवी के ही सब पार्ट्स की बात की है, टीवी तो सेम ही है लेकिन वहां पे क्या हुआ है, पहले क्यूएलईडी टेक्नोलॉजी थी, फिर ओएलईडी टेक्नोलॉजी आई, नॉर्मल एलईडी से स्टार्ट हुई थी ये सब, ठीक है। अभी ओएलईडी से भी अगर कोई बेटर आ जाएगी तो वो भी क्या हो जाएगा, पेटेंट का स्कोप में वो आ जाएगा। और लास्ट थिंग क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है या प्रोसेस है वो
इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है। नाउ हु कैन फाइल द पेटेंट? पेटेंट कोई भी इन्वेंटर है वो पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, या फिर any person being assignee of the person claiming to be the true and first inventor, या जो आपका इन्वेंटर है वो किसी को अगर असाइनी बनाता है वो भी पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, या फिर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है किसी डिजीज पर्सन का वो भी अप्लाई कर सकता है पेटेंट्स के लिए। सो दिस इज द सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है जब आपका पेटेंट ग्रांट हो जाता है। डिजाइन्स का आई थिंक आपको क्लियर है। तो बेसिकली अगर हम डिजाइन्स की बात करते हैं तो डिजाइन्स जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जो कि आपके किसको प्रोटेक्ट करती है बताइए। अभी जैसे मैंने इसमें ये एग्जांपल ले लीजिए, अभी ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जो ये इस बच्चे ने जो डिवाइस पहना हुआ है सिर्फ एक न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो पेटेंट के अंदर प्रोटेक्ट होगी। नाउ अभी मैं क्या करूंगी, मेरे पास ये डिवाइस आ गया है, मैं इसको इस तरीके से डिजाइन करूंगी, मैं इसको एक ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर में इसको बना के इंसर्ट करूंगी ताकि एक यूनिक कलर का इसका लुक आए, ठीक है। तो अगर मैंने इसको ऐसे किसी तरीके के ऑब्जेक्ट में डाला ताकि इसको एक अलग शेप मिल जाए, तो वो जो शेप है उसको मैं कहाँ प्रोटेक्ट करा सकती हूँ, डिजाइन्स में, ठीक है। सपोज आई गिव सम एस्थेटिक एस्पेक्ट, सम लुकिंग फीचर्स, सम गुड फीचर्स टू दिस। अभी तो ये अजीब सा लग रहा है, चिप्स दिखाई दे रही हैं, है ना, और फ्रेंडली भी नहीं है, थोड़ा पहनने में इतना कंफर्टेबल नहीं होगा, लेकिन मैंने क्या करना है, अभी इसको किसी दूसरे डिवाइस में डाल देना है, इसको ऐसे कवरिंग देनी है जो कि बहुत ही अपीलिंग सी हो ताकि तुरंत इसको जो देखते ही लोग खरीदें, ठीक है। तो जो लुक्स मैं इसको दूंगी वो कहाँ आप प्रोटेक्ट करोगे, डिजाइन्स में, ओके। तो वो कहाँ चला जाएगा आपका, डिजाइन्स में। जैसे देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की शेप्स, कलरफुल बॉटल्स दिखाई दे रही होंगी। तो ये सारी क्यों आई है मार्केट में, कि हर बॉटल जिसका जितना अच्छा लुक होगा, जो जितनी अच्छी दिखेगी उसका उतना ही प्राइस होगा। पर्पस तो सबका सेम ही है ना। तो जब हम डिजाइन्स की बात करते हैं तो डिजाइन्स क्या प्रोटेक्ट करता है आपका, डिजाइन्स प्रोटेक्ट द 2D and 3D shapes. It protects the aesthetic aspect or appearances, and the protection is not for the working principle, ठीक है। तो डिजाइन आपका वर्किंग प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था, उसमें जो उसका जो वो टेक्नोलॉजी थी वो कहाँ प्रोटेक्ट हो चुकी है, पेटेंट में, ठीक है। तो डिजाइन उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, डिजाइन केवल क्या प्रोटेक्ट करेगा, जो मैं उसको शेप दूंगी, जो मैं उसको आउटर मोस्ट अपीयरेंस दूंगी, जो उसको लुक्स दूंगी, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि आपको यहाँ पे अलग अलग डिजाइन में, जैसे वॉचेस भी मल्टीपल डिजाइन में आती हैं, ठीक है। आपकी ज्वेलरीज भी डिजाइन में आती है, आप सोफा खरीदते हैं, आप देखेंगे जो सोफा जितना अच्छा दिखेगा, जो व्हीकल जितना अच्छा दिखेगा, जो कार का मॉडल जितना अच्छा दिखेगा, वो सबके जो प्राइसेस हैं उतने ही हाई होते हैं ड्यू टू इट्स लुक। तो आपको फायदा क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है डिजाइन की। सबसे पहले तो मार्केट में आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाते हैं, द मेन थिंग इज कि जो जितना अच्छा, जो एक कहावत है, जैसे जो दिखता है वही बिकता है, जो जितना अच्छा दिखेगा वो ज्यादा बिकेगा, ठीक है। और दूसरा आपका जो प्रोडक्ट है उसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प मिल जाती है डिजाइन से, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं, देयर इज वन केस, अगर आपने केस पढ़ा नहीं है तो आप जाके इस पे सर्च कर सकते हैं, ये डिजाइन पे ही हुआ था। देखिए आपको दोनों कार के मॉडल्स लगभग सेम दिख रहे होंगे, सिर्फ कलर का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों कंपनीज के बीच में इस मॉडल को लेके थोड़ा विवाद चला था, ठीक है। रेंज रोवर वर्सेस लैंडविंड X7। आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हीकल इंडस्ट्रीज के लिए डिजाइन, कितना इंपॉर्टेंट फीचर है।
अभी सवाल ये आता है कि क्या हम, जैसे आपके स्कूल्स हैं, आपकी कोई फ्लैग है, ठीक है, तो क्या हम इनकी शेप्स जो है, इनके आउटर मोस्ट एस्पेक्ट्स, इनके एस्थेटिक एस्पेक्ट्स, क्या हम इनको डिजाइन्स में प्रोटेक्ट करा सकते हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज they are the subject matter of the country of a particular place. They are the subject matter of a particular country, and these things are protected under certain articles. Okay, they are not included in, you can't commercialize the design of your flag, okay, or a particular government institution. You can't commercialize it. It is protected under certain provisions which are into a different act. Okay. So this is the fees for filing a design application. So if you are a natural person, you have to pay 1,000 rupees, and if you are other than natural person, you have to pay 4,000 fees. Okay. So you will get the certificate if the designing office finds that your design is new and it is not used anywhere else, then your design will be processed for granting and you will get the certificate which looks like this. Now moving on to the next property, I think trademarks. Could anyone tell what all the things are included into trademarks? Like the Toyota symbol that we discussed on our third slide. Anyone? Am I audible? I'm audible, Ram? Yes. Okay. So how could you define trademarks? Just tell me what all could be protected under trademarks. You could write in the chat box. Hitakshi? So just look at the images that is there on this slide. And now you could be able to answer what all would be included in the trademarks. What is the first image? It is a, what is it? It is a logo. Okay. Second is a word mark. Okay. First one is a logo because there is no wordings that is written on it. Second is a word mark because it is clearly shown that it is a Coca-Cola. Its name is Coca-Cola. Okay. Now third one, it's logo plus word both. Fourth one, it's a word plus logo once again. Now fifth one is here. Fifth one is this one. It is a word mark. ठीक है, तो आप ट्रेडमार्क किसको बता सकते हैं? लोगोस को, वर्ड्स को, सिंबल्स को, इनफैक्ट आप साउंड रिकॉर्डिंग्स का भी ट्रेडमार्क करा सकते हैं. बेसिकली ट्रेडमार्क्स होते क्या हैं? If I will give you my mobile phone and I will ask you, could you tell me the company of this mobile phone?
तो how would you tell me that this particular mobile phone is from this company? अगर मैं आपको अपना मोबाइल फोन देती हूँ और मैं आपसे पूछती हूँ कि बताओ आप मेरी मोबाइल फोन की कंपनी कौन सी है, या मैं अपना बैग देती हूँ, या अपने आपको कोई भी अपनी वॉच दिखा के बोलती हूँ कि ये देखो मेरी वॉच है, क्या तुम बता सकते हो कौन सी ब्रांड की है? तो आप कैसे बताएंगे? बताइए फटाफट। Hitakshi, have you left the presentation? Am I audible? Am I audible? Yes. Okay. हाँ, तो अगर आप पता कैसे लगाएंगे कि ये पर्टिकुलर ब्रांड की है? Your particular symbol on that mobile. बेसिकली ट्रेडमार्क्स वो मार्क्स होते हैं या वो सिंबल्स होते हैं या वो साइन होते हैं जो कि किसी एक कंपनी की पहचान कराते हैं मार्केट में, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर क्लॉथ उस कंपनी का है, आपको रिकॉग्नाइज कराएंगे कि ये कंपनी की रेपुटेशन बनाते हैं। इन ट्रेडमार्क्स की मदद से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर कंपनी का है, उस पर्टिकुलर कंपनी का नहीं है। ओके, so if I talk about tell you about the trademarks, then trademarks are the words or the symbols or any combination which help or which identifies and distinguish the source of goods of or service of one trader from those of the other. Okay, now अगर आप कोई भी सपोज अभी आपको कोई स्मॉल सा स्टार्टअप स्टार्ट करना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आपने अपना जो आइडिया है उसको प्रोटेक्ट करा लिया है अभी, ठीक है, थ्रू रजिस्ट्रेशन, लेकिन आपको कमर्शलाइज करना है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो एडवर्टाइजमेंट करने के बाद से पहले आपको एक चीज और करानी पड़ेगी, उसको एक लोगो देना पड़ेगा या उसका कोई ना कोई सिंबल बनाना पड़ेगा, ताकि उस सिंबल से लोग फटाक से आपके आइडिया को जल्दी से आपके आइडिया को क्या कर पाए? रिकॉग्नाइज कर पाए, आपके प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज कर पाए। उसका फायदा क्या होगा? आप फेमस हो जाओगे। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा हुआ तो आपका बहुत जल्दी लोगों को पता चलेगा, क्योंकि हमें बहुत लंबे वर्ड्स, या अभी मैं बोलूंगी वो बकेट ऐसी थी उसमें ये था, तो इसको याद करने से बेटर है मैं सीधा ही बोल दूंगी कि उस ब्रांड की बकेट ले लो, वो बहुत अच्छी है ना? उससे क्या होगा? आसानी से आपका जो है वो एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? थोड़ा कैची लोगो चाहिए, ताकि एकदम से लोगों को याद करने में आसानी हो। या तो आप उसको अलग तरीके की शेप्स देते हो, या उसको कुछ अलग एंगल्स देते हो, या उसके राइटिंग में कुछ नया ऐड कर देते हो, या उसको कलरफुल बनाते हो। तो लोगोस कैसे होने चाहिए? दे शुड बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड। सेकंड इज they should not be similar to pre-existing logo, ठीक है। pre-existing logo जैसा नहीं होना चाहिए। अभी जैसे मैंने मान लो शूज बनाए, ठीक है, शूज मैंने बनाए हैं, लेकिन मैं उसको सेम एडिडास की जगह क्या कर रही हूँ? मैं एबिबास कर दे रही हूँ, तो इट इज नॉट अ गुड लोगो, ठीक है। तो ये कभी अलाउ नहीं किया जाता ऐसे लोगोस। सो दिस आर केसेस। अभी आप देखिए, अभी जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, स्टारबक्स पहले से ही था, तो अगर मैं ये लोगो क्रिएट कर देती हूँ, तो क्या ये लोगो रजिस्टर होगा लीगली? Why? Because it will confuse you. It will confuse you. It is not distinctive from the pre-existing material, ठीक है। सिमिलरली नीचे जो दिया गया है सबवे और सबर्ब, ठीक है, and there is a case, you should go and read about the case of Starbucks versus Sardar Bucks,
और आपको जाके पता लगाना कि इसमें ये केस क्या था और इसमें जो कोर्ट है उसने किसके फेवर में फैसला दिया था. ओके, so application for fees for the registration of your trademark is 4500. now next is copyrights. अच्छा, आपने हैरी पॉटर मूवी देखी है? Have you watched Harry Potter? Could you tell me the author of Harry Potter? नाम पता है आपको हैरी पॉटर सीरीज के ऑथर का, जिन्होंने हैरी पॉटर की पूरी स्टोरी लिखी है? Tell me the name of the author of Harry Potter. J.K. Rowling. Okay. So why has it got so popular and so famous, and why? Do you know one of the high? It is the Harry Potter series are one of the highest earning series at their time, and you know why? Yes, because something unique. Okay, that is one and the same thing. Because her literary work has was too much imaginative. इतना इमेजिनेटिव था वो कि उस टाइम पे ऐसी कोई मूवी ही नहीं आई थी जिसमें इतना सारा आपका मैजिक हो, इतना एडवांस्ड उनके इफेक्ट्स हो. ठीक है, वो स्टोरी एकदम नई थी पूरी. आपने देखा जब आप ओरिजिन कहाँ से हुआ है मूवी का? एक लिटरेरी वर्क से, राइटिंग से, स्टोरी से. ठीक है, एंड स्टोरी क्या है? क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड है. उससे जब वो मूवी बनी उसकी, तो वो क्या हो गया? उसका कमर्शलाइजेशन हो गया, प्रॉपर्टी बन गई वो. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कॉपीराइट्स भी क्या होते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होते हैं. और कॉपीराइट्स में आपके क्या क्या आते हैं? कॉपीराइट्स में आपका आता है ये 6 डोमेन्स. तो अगर आप कोई लिटरेरी वर्क कर रहे हो, अब सपोज करो जेके रोलिंग ने का कोई फ्रेंड होता और उन्होंने क्या किया होता कि वो चुपके से अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन करा देते, कॉपीराइट करा देते उनके उसका. तो वहां पे क्या होता? पूरे क्रेडिट्स किसको मिलते हैं? उनके फ्रेंड्स को. बट एवरी टाइम यू शुड बी विजिलेंट, यू शुड बी केयरफुल दैट व्हेनेवर you are working on some idea, you have to register it first, and you have to go to the concerned field, concerned intellectual property. Okay, so here she has protected her book through copyright because it is a literary work. So whenever you are dealing with these 6 domains, you have to go to the copyright registration for these things. The first is literary work. Literary work, as I have already told you, that your novels, your academic books, your thesis, all are protected under copyright. In fact, your logarithms, the Google logarithm, it is the subject matter of what? Copyright, because it is a language, and language is always in the written form. Now, second is artistic work, like Mona Lisa painting. Okay, it is also the subject matter of copyright. Then dramatic work, your musical work, you have came across many uh, disputes regarding the copyrights in the related to the musical industry. Like one movie, the Kantara was there, and there was a dispute over a music, certain music on it. It was a folk music, and without the permission of the original musician or lyricist, they have used that song, and they have not given the copyright credits to that music. So at the end, they have to remove that music from the movie. Okay, then sound recordings and cinematographic work. So जब भी आप कोई वाद विवाद में जब भी आप चल देख रहे हो, म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी न्यूज होती है वो आपको कॉपीराइट्स में सुनने को मिलती है कि कॉपीराइट इशू डाल दिए उन्होंने, रिमिक्स बनाया है, पहले पहले वाले सिंगर को क्रेडिट्स नहीं दिए. तो ये सारे कौन से सब्जेक्ट मैटर है? कॉपीराइट्स. देन लास्ट इज
geographical indications. So as the name suggests, geographical indication is the sign that is used on a product that have some specific geographical origin. ठीक है, geographical indication क्या होते हैं? आपकी वो intellectual property होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन में पॉपुलर होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो ज्योग्राफी है उसका इन्फ्लुएंस उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये केवल गुड्स हो, ये कोई भी पर्टिकुलर आर्ट भी हो सकता है, आर्ट एंड क्राफ्ट भी हो सकता है। जैसे अभी रिसेंटली मैं अभी मेघालय की तरफ गई थी, आसाम की तरफ, तो इनका उनका एक राइस होता है जिसको स्टिकी राइस बोलते हैं, वो वहां का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन था। वो इधर नहीं मिलता है, मुंबई में नहीं मिलता है। Then there is one silk, Moga silk. Moga silk is very specific to that location, Assam. Okay, so those all are the subject matter of geographical location. These are some examples. Just go through them quickly. Okay, now at the end we have some questions. I have some questions for you. How? Please answer this question. How do you protect these items? I have finished now all the properties that we were supposed to discuss. First one is patent. Before this, let's have a quick recap of it. First one was patents. Patents covers the ideas, innovations, product or a process. Second is trademarks. Trademarks protects your logos, signs, and symbols. Third one is designs. Designs protect your outermost aspects, aesthetic aspects of your article. Fourth one is copyright. Copyright protects your literary work, musical work, artistic work. And last one is geographical indications. These are the signs that are given to a product or a good for its geographical origin. Okay. Now answer this. You can write in the chat box or you could raise your hand. How do you protect these items? First one. So could you find any difference between these two? The answer is design. Any other answer? कोई और आंसर है इसका? डिजाइन के अलावा कुछ हो सकता है यहाँ पे? हिताक्षी के अलावा कोई बताइए। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ नाउ. We will be just winding up within 15 minutes. Okay, designs. और कोई आंसर? Designs and patent. Patent for what? नाउ थर्ड फिगर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्पेशल टेक्निक यूज की गई है जिसमें इस सीट को आप अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली चेयर्स में ये सब अप डाउन नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक फीचर लाया गया है। अपार्ट फ्रॉम शेप इसमें एक टेक्निकल एस्पेक्ट भी है, और टेक्निकल एस्पेक्ट्स को आप कहाँ प्रोटेक्ट कराते हैं? पेटेंट्स में। ठीक है, विच ऑफ दीज इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस? BMW, Nagpur Orange, ironing machine with stamp, PlayStation और World Wide Web. इनमें से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कौन है? The answer is Nagpur Orange. How do you protect these IPRs? Okay, the correct answer is trademarks.
How will you protect these? See, those were not protected under copyrights because these are symbols. These are well-known symbols. Okay. How do you protect these? These are, one is the music. Second is your book. Third one is your painting. So these all are subject matter of copyright. First is literary work. Second is art. First is musical work. Second is your literary work, and third one is your artistic work. So this is all from my side. If you have any doubt, you could ask me or you could write in the chat box. Any question? Am I audible? Yes, you are. Thank you, ma'am, for such valuable insights about intellectual property rights. I hope students will definitely use this information in near future. If it belongs to you, you must protect it. In democracy, we must be aware of your own rights. And many of us does not know the concept of intellectual property right. As ma'am rightly pointed out, there are tangible and intangible things, and the abstract ideas that we cannot see, but we must know it how to protect it. Otherwise, it can be yours, but someone will use it for their benefit, and that is why we must be aware of these things. The way we take care of our car, our bungalow, and we take the legal rights in such a way, you should be using your these rights to protect your intellectual ideas also. In 21st century, as they rightly pointed out, that innovation is required. We have so many examples of innovation. If you are not presenting yourself in a innovative ways in highly competitive world, you remain backward. Okay, and that is why now, moving on, I would like to call upon the stage Dr. Sagar Walvekar sir to propose a vote of thanks. Good afternoon. Valvekar sir, it seems there is some query by a student. Let her ask first. Okay, madam. Yes, Ahuja, please come up. Um, Hitakshi has asked one question. Okay. She is having a question that if she has an idea where she should go to convert it into innovation. So the first thing you should not disclose your idea to anyone else until or unless you should be sure that it will work. Okay. Second thing is, once you are done with the manufacturing of every aspect of your idea, you should approach the particular office. Now, if your idea is related to the product or a process, then you should visit a patent office. Now, how should you file your application? You should file your application online. There is IP India website. I will share you the link of it. Visit that website. There you will have to click on patent section. Then a list of forms will appear. Okay, and the fees for individual person is 1600. So for filing the patent of that particular idea, you have you have to do what? You have to pay 1600 rupees and fill the form. Now, what are the mandatory forms that you have to fill? Form 1 is your general biodata, like what's your name, where are you from, where do you reside, okay, and what is the name of your invention, how would you name it. Then form 2 is there. Form 2 will include your
invention details, like what you are designing, yeah, what your innovation is. Okay. Now, third one is Form 3. Form 3 is a mandatory forms which to give the undertaking that you are not applying for this idea anywhere else. Because why is Form 3 necessary? Because these are intellectual property rights are territorial rights, and you can't get your rights apart from your territory. Like you have got the rights in India, then you can't claim the same rights to USA or England. Okay. Now, another form is Form 5. In Form 5, you have to mention that you are the inventor. Okay, you are the inventor of that idea. So it is the declaration as to inventorship, because there are many cases that where the inventor give their ideas or give their inventions to some another company. So in that case, the company, the inventor have to ensure that the company is the only person where they have like give, they have given the rights of their ideas to that particular applicant only. Okay. मीटिंग कर लेना क्रांति. Then there is one another form which is Form 18. In Form 18, you have to ask the particular office for the examination of your invention. Okay. So these are the mandatory forms you should fill. So now, through if you have to wait for their reply, till that keep your idea with you. Okay, keep your invention with you. Once you get the reply, there are some objections that might be by the office, that is regarding the discrepancies on your invention. Okay, you have to answer on those discrepancies clearly. Then after some time, you will have your like result, whether it is granted or not. If your idea is granted, if you have got, it means you have got protection. Okay. And once you get protection, now you could go and approach a particular industry or any particular startup or any small enterprises for like further commercializing your idea. So I hope your this process is clear. Okay. Thank you. Madhukar sir, And now the same thing you could do in the copyright, trademark, or design case. You have idea, suppose you are writing a book, you should visit IP India website. There is a separate section copyrights. Click on the copyright section. Okay. A copyright window will appear where you have to file the application for the registration of copyright. Okay. Then fill the forms. So I am basically from patent department, so I can tell you the processing about patents more clearly. But there are some specific forms, mandatory forms that you have to fill. Again, you have to pay fees. That is the minimum fees. That from there you could register your copyright work. Like if you are writing some lyrics for a particular song, or you are writing a fiction book, और you have painted something. तो आजकल क्या कर रहे हैं बच्चे, सोशल मीडिया पे क्या करते हैं, अपनी पेंटिंग डालते हैं, फेमस हो जाते हैं. बट उनको करना क्या चाहिए, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से पहले अपने राइट को, अपनी पेंटिंग्स को उन्होंने प्रोटेक्ट कराना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी कौन सी पेंटिंग्स कितनी प्रभावशाली हो सकती है. ठीक है. सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, कहीं भी सोशल मीडिया पे उसका एडवर्टाइजमेंट करने से पहले आपको उसको प्रोटेक्ट कराना चाहिए. ओके. आई होप Hitachi, I have solved your query. Okay. Thank you, madam. Any query? Good afternoon, one and all. I am Dr. Sagar Valvekar. Offer vote of thanks. I extend my heartfelt gratitude to each one of you for gracing this intellectual property right program with your presence and invaluable insights. First of all, I very much thank
Honorable Principal Dr. Krantikumar Patil Sahib, Executive Director, Executive President, Tararani Vidyapeeth, Kolhapur. Sir, your visionary leadership and support have been instrumental in making this program a success. I very much thanks to today's program distinguished resource person, Mrs. Ujjwal Jaipal. Ma'am, your expertise has truly broadened our perspectives. I also must thank to Dr. Tejaswini Mudekar Madam, Principal, Kamala College, Kolhapur, and Professor Neeta Dhumal Madam, Head of the Department English and Program Coordinator, Intellectual Property Right. I very much thank to all the respected professors in various disciplines and my colleagues. I also extend my thanks to all the students whose active participation and interaction has made this event vibrant and intellectually stimulating. With the permission of the chairman, today's national webinar is over. Thank you, one and all. Thank you. Thank you,